स्वागत दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट एडिक्टर स्पेशल मैच प्रीव्यू कवरेज फॉर आईपीएल 2022। आज मैच 58 राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। आई एम जॉइंड टुडे बाय अशोक मल्होत्रा सर, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन एंड अ फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर। वेलकम अगेन अशोक सर। Thank you very much, Andy. Thank you. तो दोस्तों, as we said earlier, match 58 राजस्थान दिल्ली, डीवाई पाटिल राजस्थान थर्ड एंड दिल्ली कैपिटल्स 5। तो अशोक सर, पहले मैंने सोचा कल पे रिफ्लेक्शन थोड़ी करे। पहले तो शुभमन गिल कंसिस्टेंट हो गए, पर सर एक चीज जो आपने बहुत रिपीट किया एंड आई रिमेम्बर पहले से कि आर साई किशोर को एक मौका देना चाहिए। उन्होंने कैच लिया एंड देन सर दो विकेट चटकाए एंड हैविंग दैट एक्सेसिव हाइट आल्सो मे बी एन एडवांटेज फॉर अ स्पिनर। तो क्या बोलना है सर आपको उस पे? देखिए, साई किशोर इज अ टॉप क्लास बॉलर। मैं हैरान हूँ एडी के 4 साल चेन्नई सुपर किंग्स में उनको बिठा के एक मैच नहीं खिलाया और यहाँ पे 12वां मैच हो गया, अभी तक नहीं खिलाया, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो रनों पर अंकुश लगाते हैं और दबाव में डालते हैं और फिर राशिद खान के साथ मिलकर एक अच्छी जोड़ी के रूप में उभर सकते हैं। अगर राशिद खान को दूसरे जो बाकी टीमें हैं वो ज्यादा चांस नहीं देती, क्योंकि दूसरे छोर से रन आते रहते हैं, लेकिन जब साई किशोर ने गेंदबाजी की तो दूसरे छोर से भी रन आने बंद हो गए। ही चोक द रन फ्रॉम द अदर एंड, सो दैट इज व्हाई राशिद पिक्ड अप विकेट। साई किशोर के खेलने से राशिद खान विल बिकम मोर एक्सप्लोसिव, ही विल बी मोर इफेक्टिव। एंड नॉट टू फॉरगेट, विकेट्स अब थोड़े ड्राई हो गए, इतने मैचेस हुए हैं, दे हैव स्लोड डाउन अ बिट, सो डेफिनेटली टू स्पिनर्स आर द नीड ऑफ द आवर, एंड आई थिंक that was the master stroke they did, and that is why they won this match very comfortably after getting all out for 144. और सर चलो, गुजरात टाइटन तो अब आ गई है, उनके नाम के सामने क्यू मार्क हम देख सकते हैं। अब सर सेकंड टीम आपको कौन सी लग रही है आएगी? लखनऊ सुपर जायंट्स, इसमें कोई तो राय नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स विल क्वालिफाई। दे हैड अ बैड डे इन द ऑफिस, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट कैन हैपन। बट अ गुड के यहाँ पे हुआ है, प्लेऑफ्स में नहीं हुआ। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टीम टू कम इन विल बी लखनऊ सुपर जायंट्स and maybe Rajasthan Royals if they beat Delhi Capitals today. और सर, जस्ट स्पीकिंग ऑफ राजस्थान एंड दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान के खिलाफ सर वो नो बॉल कंट्रोवर्सी हुई एंड बिफोर दैट कोविड का दे वर हिट बाय कोविड। तो सर बदला भी लेना है और ये मिड टेबल जैम से भी सक्सीड करना है, तो दिल्ली कैपिटल्स कर पाएगी? देखिए, दिल्ली कैपिटल्स का ओपनिंग स्लॉट ठीक नहीं है, उनकी जो शुरुआत अच्छी नहीं है। पृथ्वी शॉ मैं नहीं जानता हूँ, को बीमार हैं, क्या है, क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि इसका कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आई थिंक दैट हैज बीन अ मेजर ड्रॉबैक फॉर उनके। वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी जिस तरह की शुरुआत देती थी वो नहीं दे पा रही है, और मिचेल मार्श उतने सफल नहीं हो रहे हैं जितनी उनसे अपेक्षा कर रहे थे। और वही अवस्था ऋषभ पंत की है, वो भी एक छोटे छोटे कैमियो खेल रहे हैं, पूरी पिक्चर नहीं दिखा पा रहा है। तो आप पावल पे सारा कुछ निर्भर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक अच्छी शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। वार्नर अकेले पड़ गए जब से पृथ्वी शॉ नहीं है। हालांकि केएस भरत को खिलाना मेरे को ऐसा लगता है मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि पिछली बार उन्होंने आरसीबी के बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। हो सकता है भरत और वार्नर की जोड़ी कुछ करिश्मा कर पाए, एक अच्छी नींव दे पाए, जिसपे फिर जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं दिल्ली वाले वो अपना कर्तव्य कर पाए। और सर हम बात करें संजू सैमसन की, हम ये भी दोहरा रहे थे कि शुभमन गिल और संजू दोनों का कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट वाला पीरियड चल रहा था। अब संजू सैमसन को सर कंसिस्टेंसी को कितना इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए सर आज? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान रॉयल्स को ये टूर्नामेंट जीतना है तो एक बल्लेबाज से नहीं जीत सकते। संजू सैमसन को अब कंसिस्टेंटली रन बनाने होंगे। ये नहीं कि आपने 50 बनाया 4 मैच, फिर आप गायब हो गए, फिर एक 50 बना दिया, पूरे 14 मैचेस में 2 50 बनाए और आप सबकी वाहवाही लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन इज नॉट ए 19-year-old kid anymore. He's 25, 26 and has been around for quite a time. So now he has to take more responsibility. Not to forget, he is the skipper of the side. He has to lead from front. And जाके 2-3 छक्के मारे, आउट होके चले आए, क्योंकि गेंदबाज आउट नहीं करते, खुद ब खुद आउट हो जाते। तो आई थिंक ही, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी कोचेस who must be trying to guide him, or they must be tearing their hair out. I would not know, but the fact is he is still consistently inconsistent. He plays one good knock, which we all go gaga over it, but then he falls flat. सर एक दर्शक का क्वेश्चन आया, हु इज मोर इनकंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी, संजू या ऋषभ?
There's nothing much to choose between the two. But I think Sanju is a more inconsistent because at least Rishabh is getting those 30s, 40s. He's not showing the full pictures, but he is more consistent than Sanju Samson. Sanju plays two good knocks and then plays very ordinary knocks. So I would Hmm. say maybe Rishabh is more consistent and Sanju is more inconsistent. और सर हम ऋषभ का लास्ट डिस्मिसल देखे अगेंस्ट सीएसके सर ही हैड क्वाइट अ ब्रिलियंट स्टार्ट पर फिर भी ही वाज बोल्ड तो सर डू यू थिंक दैट वाज बैड लक और पुअर शॉट सिलेक्शन और समथिंग एल्स See, the problem with the Rishabh is कि ऋषभ का टॉप गियर पे ही बैटिंग करता है, उसके पास वो न्यूट्रल गियर है ही नहीं, सिंगल्स लेने नहीं आते, एक के दो नहीं बनाने आते, वो चौके छक्कों पे बिलीव करता है, चौके छक्के लगते नहीं, जाते नहीं लगते, कम से कम सेट होने के बाद आप खेलते हैं, वो सेट होने की कोशिश नहीं करता, या तो बिल्कुल डेड खेलता है या फिर चौके छक्के मारने की कोशिश करता है, जिसके चलते विकेट जाने की संभावना रहती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं he has to find a middle path where he should get a leaf out of somebody like Virat Kohli, not the current Virat Kohli, the Virat Kohli of old who was rotating the strike. He should know how to rotate the strike. You can't keep hitting fours and sixes because there are so many video analysts, everybody they know their game and they don't bowl where you want them to bowl. So I think you have to find a way, find a middle path to be more successful. और सर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग पे सर बोथ ऑफ देम वर डिसमिस्ड विद इन द पावर प्ले अगेंस्ट द चेन्नई सुपर किंग्स तो सर ये मनदीप सिंह फिर केएस भरत एंड आई डोंट नो वेदर केएस भरत विल स्टार्ट टुडे या मनदीप सिंह आ जाएंगे या किसी और को इंट्रोड्यूस करेंगे ये जो साइकिलिंग ऑफ पोजीशंस आपको व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर मतलब बेटर नहीं है कि एक बंदे को पकड़ो और उसको ही बैक करो फॉर दैट पोजीशन अंटिल पृथ्वी शॉ इज अवेलेबल मेरे को ऐसा लगता है कि दे विल गो विद केएस भरत क्योंकि केएस भरत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है खासकर पिछले बार जिस तरह उन्होंने आरसीबी के लिए बैटिंग की थी सो मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी if Prithvi is not filled that KS Bharat they will persist with and मेरे को लगता है कि KS Bharat and Warner ही ओपन करेंगे और KS Bharat is a competent player probably he tried to play too aggressively क्योंकि बड़े समय के बाद मौका मिला था कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहते थे but I think he is a very mature player and if Warner is hitting from the other end then he is the guy who can play the role of a sheet anchor which desperately is needed by Delhi Capitals. और सर बात करें जायसवाल पे फ्रॉम अनसक्सेसफुल लास्ट मैच टू वेरी सक्सेसफुल लास्ट गेम सर जायसवाल 68 रन्स 41 डिलीवरीज तो ओवरशैडोइंग ऑल द ग्रेट बैट्समैन इन दैट टीम ड्यूरिंग द लास्ट गेम तो सर क्या बोलना है उस पे मतलब रिटेंशन पिक पेइंग यू एंड पेइंग डिविडेंड सर पहली बार चेजिंग में भी जीती थी राजस्थान रॉयल्स लास्ट गेम बिल्कुल देखिए जब आपने किसी को रिटेन किया है तो उस पर भरोसा दिखाइए वो 3-4 मैच अगर फ्लॉप होता है तो फिर बात ना करिए वही अवस्था केकेआर की थी कि वही टीम से खेले हैं जिनसे शुरुआत की थी 11 मैच लग गए आपको वापस वहां पे आने के लिए वही जायसवाल की हालत है कि जायसवाल इज अ मोर एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैटर Padikkal can go at 3 and Sanju Samson can come at 4 which gives them more solidity in the middle order एंड जायसवाल को आप लाइसेंस टू हिट दीजिए कि टेल हिम टू गो आफ्टर द बॉलिंग एंड स्पेशली इन द पावर प्ले तो उससे क्या होगा कि जायसवाल अपने अंदाज से खेल सकते हैं और बटलर पे ज्यादा दबाव नहीं आएगा बटलर समय लेके खेल सकते हैं और बाद में बड़े शॉट खेल सकते हैं और वही बात सर जॉस द बॉस बटलर पे करे तो लास्ट मैच में सर रबाडा को उन्होंने काफी अटैक किया कुछ 20 रन के लिए रबाडा ही टेकन रबाडा फॉर सम 20 रन्स और फिर सर ही वेंट ऑन अटैकिंग और फिर उस कारण अपना विकेट गवा गए तो सर उस पे क्या बोलना है सर इतनी अटैकिंग अप्रोच ठीक होती है पावर प्ले में देखिए अभी तक उन्होंने 300 बनाए तो पर एक बात तय है एडी कि अब विकेट हो गए स्लो बटलर को बॉल जो गति से आता है it suits him he likes the pace onto the ball so that is what was lacking in the last game because there were slow bowlers so his ball was not coming onto the bat that is why he could not accelerate and उनका जो नेचर है शैली है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की है तो कहीं ना कहीं थोड़े से अपने खेल में बदलाव करने होंगे but one good thing he has is once he starts playing, then he bats all the way through. Which is a kind of a leaf which somebody like Sanju Samson should take out of Butler's book. Okay, once you are in. So I think that might be one bad day off. Probably he'll bounce back. He'll do some rethinking,
and come back. The wickets are not as good for batting now as they were at the start of the tournament. और सर हम दिल्ली के मिडिल ऑर्डर पे बात करें सर तो मिचेल मार्श ने कुछ 25 रन बनाए थे। आई थिंक ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर दिल्ली इन द लास्ट गेम। दोनों पटेल सर थोड़ा अंडर शो रहे उनके साथ विद द बैट एंड शार्दुल चिप्ड इन टुवर्ड्स द एंड। तो क्या लग रहा है सर इस मध्यक्रम के परफॉर्मेंस पे और आज क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम इनसे? देखिए मध्यक्रम बहुत सॉलिड है देखने में ऑन पेपर दे हैव नॉट हम्म, डिलीवर्ड मिचेल मार्श आई एम श्योर रिकी पॉन्टिंग must be having lot of expectations for him. We all are expecting him to click, but maybe business end of the tour he'll come good, but he's a phenomenal striker of the ball. हम्म, So is Rishabh Pant. So time for them to now come good, because नहीं तो पूरा टूर्नामेंट चला जाएगा और ये मैच हार गए तो आप प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। पावल हम्म, ने एक बार फिर दिखाया कि आई कैन प्ले, ऑल्दो लास्ट मैच वाज because he was left alone. There was nobody else to back him. You know, Shardul and Aksar Patel, they can play small cameos. You know, if you need 30 runs to win in 3 overs, 4 overs, then they can win you. But if you are 40 for 5, then you don't expect Aksar हम्म। Patels and Shardul Thakurs to consolidate and make you recover. और सर अक्सर की बात करें सर लास्ट 1-2 गेम में ही हैज़ अनफॉर्चुनेटली गॉन विकेटलेस और वो शायद एक ही विकेट दूर है 100 विकेट इन द आईपीएल में से। तो सर आज उनके कितने इंपॉर्टेंट ऑल राउंड परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो आप? देखिए अक्सर के जो 4 ओवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलदीप यादव पिछले 2-3 मैचेस से काफी रन लुटा रहे हैं, बट ही हैज बीन वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू से द लीस्ट। बट हुँ, देन ही इज अ मैच विनर, he can pick up wickets also, but he has been backed very well by the Delhi Capitals. But when you talk about Aksar is the main guy who checks the flow of runs, who puts pressure from one end, so Kuldeep Yadav can pick up wickets because people start going after him, and then he can pick up wickets. So I think he's a very vital cog in this. And when he's batting, when you need late order runs, he is हुँ। always very very useful. He can hit the ball big. He can play some big shots, and definitely he's a very very vital member of the side. And not playing 2-3 games probably cost Delhi Capitals. और सर एक्स दिल्ली कैपिटल के बैट्समैन, करंट राजस्थान के बैट्समैन शिमरॉन हेटमायर जो आज मिस आउट करेंगे सर, उनके रिप्लेसमेंट के लिए आपको लग रहा है कि कोई प्योर बैट्समैन जैसे वैंडर डूसन की ज़्यादा ज़रूरत है या नीशम की तरह कोई फिनिशर की ज़रूरत है राजस्थान को? I think Van de Sande is a good player. I think they should give him a role. Okay, this is your role. You know, Van de हुँ, Sande is a phenomenal player in 20 ball cricket for South Africa. जो international cricket पे इतना अच्छा कर रहा है, तो I'm sure he can do well. हुँ, I would play Van de Sande. I know he did not do well in the 2-3 games, but probably he was intimidated by IPL. Probably he was overawed by the IPL. But I think he's a capable player and he can accelerate because he's a big hitter too. He might not do a proper job like Hetmeyer was doing, but हुँ। still a good enough job. So I would go with Van Dusen. एंड सर वी टॉक अबाउट अश्विन एंड चहल सर अभी तक इस आईपीएल में सबसे बेस्ट स्पिन अटैक प्रूव किया है 32 विकेट्स एंड अ वेरी गुड इकोनॉमी। तो सर अ वेरी रॉयल स्पिन अटैक। Absolutely, they are the best spin attack, if I may say. And now with Sai Kishore and Rashid Khan, they are equally competent. But the fact is, those 8 overs are the 8 overs which is the difference between winning and losing. Those 8 overs, not only they check the flow of runs, they pick up wickets too. So they are phenomenal pair. And I think if RR is going to win the trophy, it will be thanks to these two. और सर इनमें से एक स्पिनर पावर प्ले में डिप्लॉय हो सकता है? Maybe they might go with Ashwin, especially हम्म, for Warner. They might go with Ashwin, who can check left-handers, but हम्म, or he can pick up wickets early on. But Ashwin, when he bowls to left-handers, I think he's bowling too many leg cutters. You know, he should be bowling more of his off spinners, because Ashwin is Ashwin because of his off spinner. He's not हम्म। Ashwin because he's a Anil Kumble. So I think somewhere, I know he has his own game plan, but I think he should be concentrating. Right-handers also you can bowl off spinners. You just can't keep bowling leg cutters. So somewhere he'll have to work out this thing. But he has been effective so far. His strategy has been spot on. और सर राजस्थान के रैंक्स में एक पेस बॉलर भी है जो वार्नर के लिए खतरा है, ट्रेंट बोल्ट। जिस तरह के वो इनकमिंग बॉल डालते हैं और जो डाउन अंडर राइवलरी भी है बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया सर, प्रसिद्ध बोल्ट जस्ट एडिंग टू द लीथल बॉलिंग अटैक ऑफ राजस्थान। Yes, Trent Bolt has to pick up early wickets because he's a wicket taker. The way he bowls, he goes after. He's not worried about giving runs. He swings the ball back and swings the
ball away from a left-hander. So he can be very, very effective. And not to forget, Prasid Krishna, since he's played for India, has come up with leaps and bounds. So Hmm. definitely a wonderful bowler. And not to forget Kuldeep Sen, who's another asset. Kuldeep Sen Hmm. is 145 plus. So he's Yes, sir. another asset, big tall guy. So, they have got a very good bowling attack. Three Hmm. medium pacers and then Chahal and Ashwin. They can be more than handful for most of the sides. और सर हमारे एक व्यूअर सबजोत दास ने पूछा है कि आज सर कैप्टन वाइस कैप्टन फैंटेसी क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक कैप्टन कैप्टन का सवाल है, आई माइट go with Josh Butler, Hmm. because he's scoring tons of runs. And when you talk about vice captain, I might go with maybe Warner and Butler will be my captain and vice captain because they are performing brilliantly. और सर ये तो आपके ये पिक्स थे सर, अगर आपको 1-2 स्पेकुलेटिव पिक्स भी करने हैं फॉर फैंटेसी 11 वो क्या होंगे सर? देखिए, जहां तक आरआर का सवाल, आई विल गो विद जॉस बटलर श्योरली एंड हुँ, Yajuvendra Shah for Rajasthan Royals. And I'm going with the people who are scoring runs. And when you talk about Delhi Capitals, it has to be David Warner, definitely. And I might go with today. I might go with Kuldeep Yadav. Because he's a wicket taker, he can turn the game around. I know he's gone for very many in the last few, but I still back him. और सर एंड्रिक नोकिया का काफ़ी डिसेंट कमबैक था इन हिज फर्स्ट कमबैक गेम, बट सर लास्ट गेम में नो बॉल देन अ 6, 42 रन्स इन अ स्पेल बट 3 विकेट्स। तो क्या लग रहा है सर उनको बेहतरीन ले में आना पड़ेगा आज? बिल्कुल। देखिए, जब काफी समय के बाद आप आते हैं तो आपको जंग लगा होता है, यू आर रस्टी। हुँ, सो इट इज गेटिंग बेटर विद ईच आउटिंग। सो आई एम श्योर ही विल, बिकॉज व्हाट दिल्ली कैपिटल्स के पास अब है कि गति है, जिसकी कमी थी। मुस्तफिजुर रहमान जगह पे गेंदबाजी करते थे लेकिन वो गति नहीं थी। अब इनके पास वो पेस जो नोकिया प्रोवाइड करते हैं, तो ही माइट बी मोर इफेक्टिव अगेंस्ट समबडी लाइक जॉस बटलर। ही हुँ। माइट पिक अप अर्ली विकेट्स, ही इज bowling flat out. So और ये इस तरह का बॉलर है जो who is known to pick up wickets, who is a he has the wicket taking luck. और सर क्या नोकिया बटलर को डिसमिस कर पाएँगे आज? बिल्कुल एडी, यही बात हमने अभी की है कि नोकिया can get Butler out. He can हुँ। get Butler out with the kind of pace he has. So definitely, I expect that. और सर शार्दुल समटाइम्स ही इज़ बीन एक्सपेंसिव पर विकेट्स लेते हैं, पर खलील सर पहले कमबैक गेम में 3 विकेट्स देन जब 200 प्लस आपकी ऑपोजिशन कर रहे हो और आप 2 विकेट ले रहे हो 6 और 7 की इकोनॉमी में बीच में सर हाउ गुड इज़ दैट फॉर एनी पेस बॉलर? Khalil Ahmed has been wonderful, wonderful. He's come back. He's come back with a lot of fire, lot of aggression, lot of pace, and he wants to play for India. He's desperate to play for India. That is why he's improving and he's saying, "I want to come back and play for India." And definitely, maybe 3 yard he's quicker than what he was before, and he's bowling magnificently, to say the हुँ। least. और सर चलो अब एंड पे ही आते हैं सर, राजस्थान रॉयल्स आपको लग रहा है दैट दे विल क्लाइंब अप द पॉइंट्स टेबल फर्दर या दिल्ली अपने मिड टेबल जैम से थोड़ा निकल पाएगी? देखिए, डेली कैपिटल्स के लिए करो या मरो की स्थिति है। कहते हैं ना कि हमारे सर पे टोपी नहीं, आपके सर पे रहने नहीं देंगे। लगभग ऐसी हुँ, अवस्था है डेली कैपिटल। उनके लिए हर हालत में जीतना होगा। और दूसरी दूसरी तरफ अगर राजस्थान रॉयल्स, इफ दे वांट टू क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ, दे हैव टू विन दिस गेम, बट दे विल हैव टू कम टू द पार्टी। दे आर टू डिपेंडेंट ऑन जॉस बटलर। That is my हुँ। thinking so far. I know Yashasvi Jaiswal scored runs in the last game, but Sanju Samson is a very, very iffy. Not sure. Padikkal is not having a great time, and Hetmar is missing. So they're missing those players. So it might be, and I see from Delhi Capital, Marsh coming in form, Rishabh Pant coming in form. They have a scope for improvement and can be a challenge for most of the sides. और सर हितेश जी कठरिया ने पूछा है कि चहल आज भी सफल रह पाएँगे वार्नर के अगेंस्ट? बिल्कुल, चहल has been the pick of the bowlers. Pick of the bowler, Chahal has been, and he's been probably wonderful, be it left-hander, be it right-hander. He has been spot on. And चहल ही वार्नर की विकेट लेंगे अगर वो पहले 6 ओवर निकल गए, अगर नोकिया ने हुँ। वार्नर को आउट ना किया तो।
और अब क्या लग रहा है सर? हाँ, डीवाई या पाटिल बिल्कुल, हमने। क्योंकि अगर बोल्ट ने आउट नहीं किया तो वार्नर। सर ये जो डीवाई पाटिल ग्राउंड है, यहाँ हमने हाई स्कोरिंग गेम देखे हैं, लो स्कोरिंग गेम देखे हैं। यहाँ हमने लियम लिविंगस्टोन का 117 मीटर का सिक्स भी देखा है। तो क्या लग रहा है सर, लो स्कोरिंग मैच टुनाइट? I wouldn't say so, but I wouldn't say it will go to 180. I'll say 160 plus. 160 हम्म will be the one if the side batting first. 160 will be competitive total because I think the spinners will come in more handy now because due itni nahi hai, खासकर DY Patil mein due is not that effective. So I think हम्म 160 can be a winning total, at least a fighting total. A एंड सर winning total चेजिंग 180. चेजिंग टीम, डिफेंडिंग टीम? The defending team, I think the par total will be 160, but if they want certain to win the game, then 180 will be the हम्म total they will defend. और सर हमने देखा है कि दिल्ली कैपिटल्स जब पहले बॉलिंग कर रही है तो बहुत ही ज्यादा टारगेट हो जाता है, वेदर इज राजस्थान डिड अगेंस्ट सम लास्ट टाइम, सीएसके has done it, and ये they've had it a few times happen this season सर। तो ये अवॉइड कैसे कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स? देखिए कोशिश, अब उनके पास नोकिया नहीं था, नोकिया की वापसी इंपॉर्टेंट है, हम्म एंड कुलदीप यादव विल हैव टू बोल वेल बिकॉज कुलदीप यादव जब विकेट लेते हैं तो बड़े अच्छे विकेट लेते हैं, लेकिन जब रन देते हैं तो बहुत ज्यादा रन देते हैं बिकॉज इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड देन नॉट टू फॉरगेट नोकिया एंड अक्षर पटेल कमिंग इन probably strength put adds muscle to their bowling attack. So I think you will not see that many runs going from Delhi Capital side. Yes, sir. And with that, guys, let's see. Will Rajasthan Royals be closer to the playoff in the midweek to Wednesday? Will Delhi Capitals move out of the middle of the